Hello and welcome to a conversation with somebody who I've worked with 20 years back when we were both doing uh, our initial forays into video work and broadcasting. And he has thereafter gone on to set up his own company doing fabulous work around the world, promoting multiple leagues, not just in Sri Lanka, in Zimbabwe, in multiple cricketing countries, full member nations of the International Cricket Council, Anil Mohan. Anil, delighted to have you with me. Now founder of the IPG Group and promoter of the Sri Lankan Premier League. First, interesting journey, very interesting journey, and now you have another edition of the Sri Lanka Premier League in 1 month's time. Give me a sense. I was reading about a press release. You've got American companies interested in it as well. So how are things going? Yes, hi. Thank you so much, Boria. It's been a long time since we met now. So yeah, so my journey, as you know, I was doing production worldwide, whether it's everywhere in the world I have done, whether it's CPL, the West Indies, Pakistan, Sri Lanka, Zimbabwe, South Africa. And after that, I've started my own company last 10 years back, which is IPG Group. So we have the rights for Sri Lanka Premier League and Zimbabwe Cricket Board. Then we have rights for Singapore and Malaysia. So these are the four rights we have with IPG Group. And we were looking for investors because to run the league you need investor backup. For the production business, I get money from the boards, but when I do uh, leagues, I need full backup from a good investors, corporate investors, basically. So we went to the market, and a lot of people from US market have shown interest. And Flash Sports Media is one of them. Who you're reading the newspapers, they have come up with a investment. But we are still looking for more investors so that because we have multiple leagues and we need more investment to do this all the leagues successfully. So, so when you say I read the press release also, which came out in the United States. In terms of viability, clearly you have the Sri Lankan league in a month from now. What was the initial feedback that you got in the American market? I mean, because clearly we have seen, for example, Cal Somani led consortium wanting to invest in the IPL. That didn't perhaps happen, but for whatever reason, and it went to another consortium. But there is a lot of interest in the US market to come to South Asia to invest in cricketing properties. So, what was your initial understanding from the US market? So see, people have understood now. Earlier, in subcontinent US were not investing that much. Now with the IPL, thanks to IPL, people understand the valuation thing that everyone has to invest. Like IPL teams invest for 10, 15 years, then they get some valuation and then they got good returns. Same way, leagues always have valuation, whether it's Sri Lanka League, Malaysia, Zimbabwe, PSL, or anywhere in the world, all the leagues have valuation. Only thing is you need an investor who can back you up for at least 10 years. So you run the league nicely, get good players, get good owners, get good crowd. These are the critical things. So once you have that and plus the backup, financial backup, your valuation will go really good. Like with the five leagues in hand, IPG Group, we can be a $1 billion company in next 5 years. Hmm. Sri Lanka में feedback क्या था Anil? I mean, clearly there is so much of talent in that country, and how much support has the board given you? It is a huge story for the players. It is an aspirational story for the players, giving the players a platform. Give me a sense about the Lanka Premier League. Sri Lanka में the best part is their full board member. हम लोगों ने 2020 में 2020 में we started this. So it was a COVID. Suddenly COVID happened. So at that time now no leagues are happening. IPL was stopped. PSL was stopped. But fortunately, we successfully delivered LPL, and that was the most watched league worldwide. पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उसको देखा गया because there was no content that month. Only Lanka Premier Live going on. So everyone watched it. The best part is 2017, 18, 19 में जब ये महिला और संघ और सारी टीम ये लोग रिटायर हुए तो इनकी टीम वाज डाउन थी. LPL 2020 के बाद दे स्टार्टेड गेटिंग टैलेंट लाइक वहेंदु, बहुत सारे मतीशा, ये सारे आए. और 22 में या 23 में दे वन द एशिया कप बिकॉज स्टेट जी. ऑफ टीम इज बिल्ट. एशिया कप जीत गए वो लोग. मतलब नॉट अ स्मॉल थिंग बीटिंग इंडिया एंड ऑल दिस कंट्रीज, पाकिस्तान सबको जीत गए एशिया कप.
उसके बाद से इनका टैलेंट स्टार्ट हुआ. इफ यू सी ऑल दीज गाइज वर पिक फॉर मिलियन मिलियन डॉलर्स इन आईपीएल. तो वहां से स्टार्ट हुआ. और हम लोग छोटे छोटे गांव गए हैं और उसके वहां से टैलेंट लेके आए. लाइक वैस खान इज ए स्मॉल बॉय फ्रॉम अपना जाफना. उसको सडनली पिकड अप फ्रॉम जाफना विलेजेस से पिक करके उसको ही बिकम ए सुपरस्टार नाउ. तो हम वाह. लोग जो हमारा एम है टैलेंट लाना है. और आई थिंक विद द फुल बाउंड में उनके पास टैलेंट बहुत है. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. We had challenges, financial challenges also, but we are now in the sixth year. And बहुत अच्छा फीडबैक है सिक्स सीजन का भी. बहुत अच्छा हमारा फीडबैक आ रहा है. तो होपफुली एवरीथिंग विल गो वेल. थोड़ा सा सीजन के बारे में भी बता दीजिए अनिल. आई जुलाई 17 से चालू करके आप अगस्त 8 तक कर रहे हो. मल्टीपल टीम्स, यू आर प्लेइंग इन कोलंबो, प्लेइंग इन डम्बुला. फॉर पीपल watching from across the world, give me a sense of the season because you've already done the draft. I was reading a lot of stuff that has already come out. The teams have been, the squads are now ready. Give me a sense of the season. उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए. जी, तो हमने 1 जून को ड्राफ्ट क्लोज कर दिया है. अभी सारा टीम्स आर डिसाइडेड. एंड वी आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग इन डेविड वार्नर फॉर दिस ईयर फॉर द प्लेऑफ्स. वी आर ट्राइंग दैट. हमारा जो सीजन है ओपनिंग सेरेमनी हमने एक नए स्टेडियम से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप का एक ही मैच हुआ है वहाँ T20 में एसएससी. वहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं. तो वी आर डूइंग द ओपनिंग सेरेमनी फ्रॉम देयर. वहाँ पे 3-4 days वहाँ रह के देन वी गो टू दम्बुला. वी स्टे देयर. And then after that Kandy, and then come back for playoffs and final to Premadasa Stadium, which is a because Premadasa is big stadium, 30,000 people. तो वही एक स्टेज है जहाँ पे हम लोग बड़े क्राउड को लाके. एंड लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वर 27,000 पीपल इन द फाइनल्स. एंड वी डिड ड्रोन शो, वी डिड लॉट ऑफ थिंग्स. तो सिमिलर प्लान्स आर देयर कि अच्छे गुड लेवल पे सारा काम मतलब पूरा इवेंट किया जाए. पूरा पूरा ऑल ऑफ द लोकल टैलेंट, आई मीन द मेजर प्लेयर्स, ग्लोबल स्टार्स कौन कौन इस बार का थोड़ा सा अट्रैक्शंस कौन कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें. आपने डेविड वार्नर का जिक्र ऑलरेडी कर दिया है. एक डेविड वार्नर को लिया है हमने. उसके बाद मोइन अली है. उसके बाद विजय शंकर है जो रिटायर हुए हैं अभी अभी वहां से आईपीएल से. उन्होंने आगे हमारे साथ खेल रहे हैं. उसके बाद देर इज साकिब इज देयर. तस्किन इज देयर. 2 बांग्लादेशी. देन वी ऑल्सो टुक सम गुड नेपाली प्लेयर्स संदीप और अपना और एक दो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं अभी. तो एंड वी क्लियरली ऑल्सो हैव गुड क्लियरली पाकिस्तानी, वेरी गुड पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑल्सो. सॉरी, फरहान है जो नंबर 1 T20 आईसीसी रैंकिंग में इस समय. फरहान साहिबजादा, ही इज प्लेइंग Yeah, फॉर अस. yeah, yeah. Oh, wow. So clearly there is global talent in the league this time. Big, you've got South Africans, you've got Australia, you've got Nepal, you've got Pakistan, you've got Vijay Shankar, and you've obviously got local talent. प्लस हम लोगों ने अपने ड्राफ्ट में कंपलसरी रखा टू मेक द व्यूअरशिप मोर कि एक एसोसिएट नेशन प्लेयर को पिक करना है. तो हमने एक अमेरिकन वो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर उसको पिक किया. हमने नेपाल से पिक किया. फिर हमने यूएई से पिक किया. तो एसोसिएट नेशन में जब आप उनके प्लेयर्स पिक करते हो तो योर व्यूअरशिप इंक्रीजेस. आप समझ रहे. तो उसमें हमने एक एसोसिएट कंपलसरी करा है. और एक 23 अंडर 23 प्लेयर कंपलसरी टू प्ले इन द 11 फ्रॉम द श्रीलंकन. सो not just या not just को not भी चांस just दिया. not just viewership. Clearly आप talent को भी you are giving wings, no? Because if you are हंड्रेड giving परसेंट associate यस. member country को आप ला रहे हो तो automatically their standard improves if you are playing with international players They are from sitting with all the extra-national teams. legends. Yeah, they are sitting with all the legends. They will improve for sure. एक बार आके डगआउट में भी बैठते हैं प्रैक्टिस मैचेस. इफ दे प्ले मैच दैट विल बी बिग बिकॉज दैट साउथ अफ्रीकन प्लेयर इज गेटिंग ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है संदीप. एंड देयर 2 more नेपाली प्लेयर्स. इट्स नॉट वन. 3 players फ्रॉम नेपाल, यूएई और 3-4 जगह से और लेके इन्होंने मतलब टैलेंट को पूरा चांस दे रहे हैं एसोसिएट नेशन को. मलेशियन प्लेयर्स भी वी आर ट्राइंग टू गेट इन दिस जो Excellent. So हमारा this नेक्स्ट is है. this is this is clearly becoming global with inclusion of associates. जो cricket को globalize करते हुए help भी करेगा, because that's the big story that I'm understanding from what you are telling me. Anil, दैट्स two राइट. three other two three other questions. Sport देखिए अभी it's part of soft power. श्रीलंका के लिए तो very important given what is happening in the Middle East. हम जानते हैं that economically the country was struggling, but with sport you can still kind of bring joy, give vibrancy. From that standpoint, I mean, how are the locals reacting to these opportunities, Anil? Because clearly when I was there they were consuming the IPL, they must be consuming the LPL strongly, because this is something that will give their kind of country a large lift in a rather difficult geopolitical situation. No, whatever is the political situation, whatever is the board situation, this is the biggest sporting event of Sri Lanka, and everyone understand that. And now
with this year, we're getting so much support from each city. They are all supporting. We already started fan followings and all that. तो और उसके बाद सबसे बड़ा important part is the players. Players wait for LPL round the year, because that 1 year income they get is like almost for the year. All the support staff, ये वो सारा लोग इतना $11 million का investment रहता है, $11 to $12 million per year. That is all in dollars coming to the country, to the hotels, to the players, to Massive. support staff, to the transport guy. हर आदमी को मिलता है, मतलब very good, all in dollars, which we bring to country. So I met the sports minister. I also met. I'm planning to meet the president, and because इसको और बड़े लेवल पे लेके जाना है उनके सपोर्ट से. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग. Anil, ये बताएं. I mean, I'm in the UK at this point for the Women's World Cup. Any plans to start a women's league also locally, because women's cricket is coming up seriously. India won the last World Cup. There's a lot of fanfare going on. Will you also want to invest in the women's game going forward? Last 2 years, we want to do women in this only. Next year, sports minister and the committee, new committee we have told, let's do women from next year. If everything goes well, we'll do there. In Malaysia, we already have women's rights. So we want to do men, women. This year might be men and next year men, women. So these two countries definitely, women. Women cricket is doing very well. Sri Lanka player, women cricket is doing very well. तो ये Yeah, सबको मेरे Chamari को Atapattu immediately. is a Yes, global star. she's superstar. Yeah, superstar. So we are trying to take advantage of this, and एक इसको start करना है, क्योंकि इसी लीग में you can bring all the players, Indian, Australia, सारे लोग, कोई restrictions नहीं है, like Indian players की जैसे इंडिया में है, इस पे नहीं है. तो वुमेन का स्टार्ट करना is very very critical and good for women cricket because they are doing very well. India has won the World Cup. ये अपना श्रीलंकन्स आर डूइंग वेरी वेल. तो और भी एसोसिएट वाले बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लाइक इंडोनेशियंस एंड ऑल दो तीन कंट्री, थाईलैंड, एंड आई थिंक दे आर प्लेइंग वेरी वेल. सो वी हैव टू प्रमोट मैंने देम. ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि देखिए विमेन्स लीग अगर आप चालू करोगे सो देयर शुड बी सीरियस इंटरेस्ट इन द फ्रॉम द अमेरिकन मार्केट आल्सो, बिकॉज द डायस्पोरा विल बी लुकिंग एट इट दैट दिस इज अ वायबल ग्लोबल प्रॉपर्टी, इट्स द फर्स्ट इन दैट सेंस. सो देयर विल बी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इंटरेस्ट आल्सो. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन एंड नाउ वुमेन का विच सॉरी. हाँ मैं सवाल खत्म कर लूं, बिकॉज ओलंपिक्स में भी वुमेन्स क्रिकेट आ गया है. LA 28 में मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट दैट विल गिव क्रिकेट एज अ स्पोर्ट अ मैसिव बूस्ट इन द US. हमारे यहाँ पे भी कंजम्पशन ओलंपिक्स हम जानते हैं. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दैट इफ यू स्टार्ट द वुमेन्स गेम 28 ओलंपिक्स, इफ यू स्टार्ट नेक्स्ट ईयर इन 27, you should have significant investor interest from areas like the United States. I totally agree with you, and plus, women cricket will also bring lots of commercial value, Boria bhai, because आप सी द वुमेन्स ब्रांड इन द वर्ल्ड वाइड, लाइक हाउ मेनी ब्रांड्स आर देयर, कितने सारे ब्रांड्स होते हैं जो वुमेन के लिए सपोर्ट करने आएंगे. तो वी हैव टू स्टार्ट दिस इमीडिएटली. और अगले साल तो वो मतलब करना ही करना है हम लोगों ने. मतलब वी हैव डिस्कस विद द बोर्ड, एंड एज सून एज द न्यू बोर्ड इज अपॉइंटेड, वी विल गिव द प्रपोजल टू देम टू हैव वुमेन हेयर. एंड मलेशिया तो करूंगा ही करूंगा, मतलब बिकॉज आई हैव द राइट्स ऑलरेडी. Okay, last couple of questions before I end. I mean, in your experience of having conducted these leagues and these rights, clearly, where is cricket headed? Because देखिए उदय शंकर का एक comment था that over the next few years franchise cricket will become the bone. Bilateral कौन देखेगा क्योंकि commercial viability बहुत कम हो चुका है. हमने मल्टीपल ऐसे स्टेटमेंट्स देखे हैं, ललित मोदी बार बार बोल रहा है, हमने बहुत बार ही देखा है कि देखो बायलैटरल क्रिकेट से ज्यादा ये लीग्स ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं. आपका एक्सपीरियंस से, नाउ दैट यू आर डीलिंग विद सो मेनी बोर्ड्स, वेयर डू यू सी क्रिकेट हेडेड? इज इट गोइंग द फ्रेंचाइज वे एंड विल ग्रेजुअली बायलैटरल क्रिकेट गिव वे टू मोर एंड मोर ऑफ दीज फ्रेंचाइज लीग्स? You're right, and they're also right because franchisee cricket will grow and will keep growing, and that's the way you find talent. अगर आप IPL को देख लो, फ्रेंचाइजी क्रिकेट हुआ तो हमारे पास इस समय वी कैन मेक 4 टीम्स नाउ. उससे पहले कुछ था 10-15 साल पहले इस तरह से कुछ भी. सेम वे में श्रीलंका, अदर कंट्रीज विल ग्रो लाइक दिस. FTP चलता रहेगा जो भी है, बट दिस इज द न्यू थिंग, एंड दिस विल बी द लाइक दिस विल हैपन, लाइक वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट विल गो. कमर्शियल मार्केट है, टैलेंट आप प्रोवाइड करते हो. और अच्छा, मेन चीज जो मैं बोलना चाह रहा था आपसे, व्हेन यू डू FTP, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, लेट्स से दो कंट्रियां ही वॉच कर रही होती हैं, और चलो थोड़ा बहुत और व्यूअरशिप है. व्हेन यू डू ए लीग, आई एम शोइंग लंका प्रीमियर लीग मोर देन 150 कंट्रीज एंड एवरीवन इज वॉचिंग.
क्योंकि there are Sri Lankans, Indian, Bangladeshis, Nepal, Europeans, all are sitting in every country. They who love cricket, South Africans. तो वो सब वॉच करते हैं. तो वो आपका ये जो अभी भी ना फ्रेंचाइजी बिजनेस जो फ्रेंचाइजी ये टेलीकास्ट है वो रीच ही नहीं कर पा रहा है. उसको मैं पूरा यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका ऑल दोस कंट्रीज वी आर ट्राइंग टू डू. दैट्स व्हाई फ्लैश स्पोर्ट्स आल्सो वी ट्राइंग टू बिल्ड ए प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग हम जहाँ पे नहीं जा सकते वहाँ पे हम फ्री दिखाएंगे लोगों को या विद मिनिमम चार्ज, like very small charge. So that's what is our aim for next 2-3 years. Final question, local crowd involvement कैसा रह रहा है अनिल? Because हमने देखा है that once the local crowd comes in, men, women, youngsters, automatically एक अलग ही माहौल बन जाता है. How are you getting the local people involved? What are the integration plans in Sri Lanka this time round in July? So this year and in the past also, we had no problem issues with the crowd. So what we are doing is doing multiple activation in the malls, hiring some influencers, signing up with the local Keels groups and all those group where stores they give free tickets. So we give around 50% tickets, right now on initial stage free, like opening ceremony. We want crowd to come in, enjoy cricket, and then we will start making money on cricket, like ticketing later on. But right now, we are trying to bring in more crowd. And we had, I'm telling you, 7-8 thousand people in Kandy, same in Damula, 7-8 thousand. And crowd is like, that's the best part of our Sri Lanka cricket playing nation has. They love cricket. Sometimes up and down team ka hota hai, but that doesn't mean that, they don't like cricket. They come for cricket. और सबसे बढ़िया पार्ट है वहाँ बच्चे हर हर तरीके के लोग वुमेन एवरीवन कम्स एंड एंजॉयज देयर. सो दैट्स द Lovely. गुड पार्ट ऑफ श्रीलंका. या Lovely. At some point, मैं खुद आना चाहूंगा. इस साल my people will be there. Devashish and Vaibhav will be there. We will cover the tournament because for us it's an aspirational story. It is growing cricket as a brand, as a business, and of course, far more importantly, giving talent a lot of opportunity. At some point, मैं खुद भी आना चाहूंगा. इस साल Commonwealth Games में busy रहूंगा. Otherwise, इस साल ही आ जाता. But more strength to you, Anil. All the very best to you. I'm sure this interview will be watched by a lot of people globally who will seek investment ऑल्सो opportunity and यस. who will understand that this brand is viable now. So there are more and more opportunities coming their way. Thank you very या much, Anil सो Mohan. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, हाँ जी, बोरिया जस्ट इसको आप मतलब वी आर द ओनली कंपनी हु हैव द मैक्सिमम राइट्स वर्ल्ड वाइड. लाइक इफ यू जी, गो एनी कंपनी इन द वर्ल्ड, वेदर इज स्पोर्ट्स 5 आईएमजी और जो भी कंपनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की होती हैं, आईपीजी ग्रुप इज द ओनली कंपनी हु हैज 5 league rights. No one has that. So good investment opportunity in the group if anyone wants to invest right now. Because this is the time to invest when you invest very low and you gain, it's a 100x thing, basically. So okay, that's okay. what I would suggest. Yeah. Yeah. See, sport will. This is the decade where South Asia will grow in sport, and all of us know that. I mean, the viability will grow now that cricket is part of multidiscipline sports as well. So, as I said, I mean, we will keep a very close eye on this league, and I'm sure it'll be a big success. And I wish you all the very best going forward, Anil, and Thank you so look much. forward to catching Thanks. up with you physically very soon. Thank you very Thank much for you for joining. your and Thank thank you. you for your support. Please come for 17 July if possible. Yeah. Opening ceremony. Thank you. Okay, thank you.